मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैड अबाउट व्लॉग्स में। आज हम आए हैं उत्तराखंड के। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. पहाड़ी देख रहे हैं जो बादलों से घिरी हुई है, वो है पूर्णागिरि धाम। एक शक्तिपीठ है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। बहुत दूर दूर से लोग इस मंदिर में आते हैं दर्शन करने, और वो लगभग यहाँ से 12-13 किलोमीटर है, हिल एरिया है। आप साइकिल से जाना वहाँ पॉसिबल तो है, बट अभी हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम लोग वहाँ जा पाएँ। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, कोई बाइक से आता है, कोई अपनी गाड़ी से आता है। बाकी ट्रेन्स अवेलेबल हैं टनकपुर तक के लिए, लखनऊ से, दिल्ली से आप यहाँ आ सकते हैं बहुत इजीली। और फिर टनकपुर से आपको यहाँ पर आने के लिए टैक्सीज अवेलेबल हैं, और जो बसेस रहती हैं वो अवेलेबल हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, मैं बता नहीं सकता। मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, क्या खूबसूरत 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 खूबसूरत, और सिर्फ एक ही वर्ड, खूबसूरत। ये जो प्लेस है ना, बूम, ये भी लोगों की पहुंच से दूर है। लोगों को इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए ये ना बहुत साफ़ सुथरा है। अभी आने के लिए रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जंगल के बीच में से आना पड़ता है। बहुत शांत प्लेस है, साफ़ सुथरा सा प्लेस है। लोग अभी इस जगह को ज़्यादा जानते नहीं है, शायद मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों को पता लगेगा इस जगह के बारे में, तो लोग आएंगे। फिर ऐसी जगह है ना, बहुत किस्मत वालों को देखने के लिए मिलती हैं, और मैं उन किस्मत वालों में से हूँ कि इतने ब्यूटीफुल प्लेस को इतने करीबी से महसूस कर पा रहा हूँ।
शायद मैं इस वीडियो में वो सब चीज़ें आपको ना एक्सप्लेन कर पाऊँ, ना बता पाऊँ, जो इस जगह का एहसास आपको यहाँ आने के बाद होगा। आइए, जो भी नेचर लवर हैं आप लोगों में से, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, डेफिनेटली आप भी नेचर लवर्स होंगे, इसलिए आप मेरी वीडियोस देखते हैं। अब जाने का वक्त आ गया है। मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का बिल्कुल भी। और क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है जैसे ना मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सी दुनिया में जीने जा रहा हूँ। बट फिलहाल जाना तो सही है, काम हम भी देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, थोड़ा सा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक रखिए अपना ध्यान, और खूबसूरत इलाकों में ऐसे घूमते रहिए, मस्ती करते रहिए, अपने जीवन का आनंद लेते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा। मैड अबाउट ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।